Okay, Ms. Marina, please unmute yourself. I have allowed you to unmute yourself. You can unmute yourself. Okay. So, Yes, Ms. sir. Marina, you were talking about your thesis. What is the Yes, name sir. of My your thesis, supervisor, by the way? morphemes impact on vocabulary. Okay, morphemes impacts on vocabulary. What is the name of your Yes, sir. supervisor? Dr. Imran, Hmm. Well, Dr. Muhammad Imran from Khaja Farid University, Raimir Khan. okay, that's fine. So you have completed your thesis. That's very good. Have you Yes, sir. published any Yes. research paper? No, no, sir. Not yet. Okay, how many types of research are there? Because you have jotted down your whole thesis and definitely you have used a research methodology. So how many types of research are there that you have, and what is the name of the particular type that you have utilized in your own dissertation, in your own thesis? Sir, my research was experimental research, and there are All right. other two types: qualitative Experimental research, means it was qualitative. So, what are the and five quantitative. features of qualitative research? It was qualitative plus quantitative. That means it's a mixed one. Yes, sir. Your research is qualitative or quantitative. No, no, my research was experimental. Okay, experimental research. So, Yes, yes. I taught the morphemes to the student of my academy, and then I take a test, a pre-test, and after teaching them for 15 days, so I again okay, take all the right, test. all right, all right. So, what is your sample size? 25 students. So, how you came to know that 25 students are more than enough for this particular research? Why 25? Yes, Why not more than 25? actually, sir, I have only 25 students. So have you mentioned it there in the researchers' limitations? Yes, sir. Researchers' limitations that okay. So don't you feel because 25 students are there, the research, the questions that you have answered, they are not reliable answers because your sample size is just 25 students. So how we can generalize the results of this research? Um, when you see the results of 25 students, sir, then if you apply this on the large size of students, you can get the same results, because morphemes teaching was not too much difficult. Morphemes are limited, not very vast or big concept of morphemes. So students, Mhm. 10 student or 50 student or 100 student, you can get the same results. Mhm. When we talk about experimental research, we are bound to remain in controlled environment. Okay? In controlled environment. So generally, this type of research is not encouraged for the social sciences. So just last question, and definitely we are going to talk about the next topic. What are the four types of experimental research? Four types of experimental research. No, sir, sorry, sir. No worries. All right. So, what is the main purpose of taking experimental research? Why experimental research? Why not? There are a lot many other types of research. So, why experimental research? Because sir, morphemes, I want to know about the morphemes impact on vocabulary. There was also the morpheme impact on spellings, but I want to know their impact on vocabulary, how the morpheme
affect our vocabulary, or is there morpheme important for vocabulary building or not? So that's why there was the main thing was to do an experiment on the student to know about the results. Uh, is it Okay, fair enough. Fair enough. Fair good or enough. not Thank you so much. for students? Okay, all right. Because you have mentioned morphemes, so I just Yes, sir. want to know what is the exact definition of morpheme? Morpheme is a short segment or a smallest unit of a word, meaningful, undividable, and some same meaning in the different environment. Okay, so in this word incoming, how many morphemes we have? There is in and I and there is incoming may in Uh-huh. in is a morpheme, and Okay, so how many total types of morphemes are there? types in this Yeah, word answer. incoming. Okay, what is the difference between lexical and grammatical morphemes? I know about it, Mhm. sir, but that this time I don't the real and exact difference between them. Okay, you are there in a class and you are supposed to teach the student to identify a morpheme. So how you are going to teach them how to identify a morpheme? Morpheme, when I taught them, then I will taught them or give them the concept of prefix, suffix, root. Uh, Okay. yes, and after that I can ask them about to identify a morpheme. Morpheme may be a single word. For example, when we write dog and then write dogs, then S is a morpheme because S has a meaning, but it is undividable and single word. If I give them concept, then I can Mhm. ask them the what identify morpheme. So you are interested in linguistics only, if I'm not wrong? No, no, sir. I was interested in literature, but due to only one program, so I selected linguistics. Okay, so but you have completed your MPhil in linguistics. That is the highest Yes, degree. So, you know, in yes, linguistics, we have a very updated form that is the corpus linguistics. Okay. So, yes, sir. do you have any idea about the corpus, about the corpora? What is the difference between corpus linguistics and how it operates basically? Sir, I have read about it, but not yet in my first and second Okay. semester. Okay. All right. So, talking about literature, what is the name of your favorite writer in literature? My favorite writer name is G.B. Shah, and I like him from my childhood. When I don't know what is English and what is English writers or British or Irish writer, I just only Mhm. read the Sunday magazine and Oh, family yes. magazine. It means And that you yes, are well aware of GB Shah. Thank you so much. So, when GB Shah won the Nobel Prize, sir, won the Nobel Prize in 1925. are you sure about that? Yes, sir, 1925. Good. That's very good. So, what is the name of your favorite culmination of GB Shah that you have completely read by text? Is there any book written by GB Shah that you have read Yes, by sir, text? yes, sir. I have also watched the movie of Pygmalion and Mrs. Warren, and I also read the text book and text of Pygmalion and Mrs. Warren's preparation.
And I also have the movie of Man and Superman, but I not yet seen that, not watched that movie yet, but I have, and I was waiting for my free time so that I watch that movie. And I also have another movie of GB Shah, but not seen and Okay. not watched yet. Okay, so what does the word Pygmalion mean? Because you have watched a movie, so I'm sure that you know the very meaning of Pygmalion. Who was Pygmalion? Pygmalion was Lisa Doolittle and Lisa Doolittle. Hmm. All right. Maybe I'm talking about the Pygmalion, the definition of the word Pygmalion. All right. Lisa Doolittle is there, but the definition of the word Pygmalion. Um, Okay. All right. no, sir. So, would last question, and after we are going to some of your interview. Last question: what is the Yes, sir. main idea of Pygmalion? Why Jibisha wrote Pygmalion? He wrote to show the difference of social classes, Very stereotypes, good. and Well done. appearance-based reality. Oh yes. What is the name of the capital of Pakistan? Yes, sir. What is the name of the capital of Pakistan? Islamabad, sir. Okay. So when the capital was shifted from Karachi to Islamabad In 1927, I think, not sure. in 1927. No, sir. No, no, sir. Sorry, Okay. sorry, sir. Mhm. All I right. have taught this my student, but I am not remember this time, sir. Sorry. No worries. Okay. So Gwadar Port. Pakistan has Yes, sir. purchased Gwadar Port from a country. Do you know the name of that Oman, country? sir. Oman, sir. Oh yes, yes, Oman. Well, yes, Hamza, you're right. Oh yes, it is Oman. Basically, officially it was on the 14th of August 1967 after 20 years, Hamza. Okay, thank you so much, Marina. Here we are ending your formal interview. अब हम बात कर लेते हैं आपके जो हैं दोनों एस्पेक्ट्स की जो अच्छी चीजें थी वो ये थी कि जो कि आपने अपना इंट्रोडक्शन अच्छा दिया और उसमें आपने अपनी रिसर्च को मेंशन कर दिया सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर रिसर्च आपको इसमें से ठीक ठाक क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट करने चाहिए ठीक है एक्सपेरिमेंटल Yes, sir. रिसर्च है तो इसके टाइप को भी देख के जाइए वाई एक्सपेरिमेंटल सो 25 स्टूडेंट्स हैं तो 25 स्टूडेंट्स को क्यों लिया गया इन 25 स्टूडेंट्स को कैसे सिलेक्ट किया गया इनकी Yes, sir. सैम्पलिंग जो है वो कैसे की गई सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी थी ठीक है Yes, sir. क्या ये जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल था या नहीं था ठीक है जी ठीक सो है सर. और रिसर्चर्स लिमिटेशन जो हैं ये क्या मेंशन की गई हैं वहां पे रिसर्चर्स लिमिटेशन जो हैं एंड व्हेनेवर यू से कि आपने एक्सपेरिमेंटल क्यों लिया तो उसका सबसे बड़ा आंसर ये होता है कि बिकॉज इट इज आंसरिंग माय रिसर्च क्वेश्चंस जो मेरे रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है दैट इज द रीजन मैं इस पे चला गया ठीक है सो मॉर्फीम इज द बेसिक टॉपिक ऑफ लिंग्विस्टिक्स तो आप इसको जो है जब देखते हैं तो इसको डेफिनेटली मे बी यू विल हैव टू परफॉर्म दिस टॉपिक ऑन द व्हाइट बोर्ड इन फ्रंट ऑफ द पैनल तो इसको तैयार करके जाइएगा इसकी जो टाइप्स ठीक है. होती हैं फ्री एंड बाउंड मॉर्फिम ओवरऑल योर नॉलेज अबाउट जीबी शाह वो बहुत अच्छा था लिटरेचर में आपका जो है इसके नोबेल प्राइज पे जो है वो अच्छा है कॉर्पस के मुतालिक आपको नॉलेज नहीं है दैट इज अ सरप्राइजिंग थिंग और ये कोशिश करें कि बेसिक चीजों को रिवाइज कर लें बट द गुड थिंग इज दैट आपने अपनी रिसर्च में जो क्वेश्चन थे उनको ठीक ठाक तरीके से कोशिश किया तब उन्हें आंसर कर सकें और आपने कोशिश की कि आप अंडर प्रेशर नहीं आए आपने अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखा बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू cross 65 and we are falling somewhere between 61 to 65 okay so Yes, sir. we need to work more here ताकि हम 70 से ऊपर जा सकें Inshallah. ओके जी
Thank you so much, Miss Marina. So Thank you you. enjoyed the conversation. अब हम मूव ऑन करते हैं जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ और हम देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले प्लीज अपना नेम ठीक लिख लीजिएगा ताकि और वीवो 1811 आप भी लिख लीजिएगा प्लीज। कोशिश करें कि अपना रियल नेम जो है वो यूज कर लिया करें। अच्छा जी, जिन स्टूडेंट्स के अभी तक इंटरव्यूज नहीं हुए वो सिर्फ अपना नेम लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में। जिनके नहीं हुए, जिनके प्लान हो चुके थे उन्होंने अटेंड नहीं किया, वो काइंडली अभी नहीं लिखिएगा, सिर्फ वही लिखेंगे जिनके इंटरव्यूज अभी तक नहीं हुए। दे रिक्वेस्टेड टू मेंशन देयर नेम। ओके, ओह यस, आयशा, माशाल्लाह आयशा, आपको मैं बताता चलूं यहाँ पे आयशा बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है माशाल्लाह। और आयशा जो है बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस करती रही हैं और आई एम एक्सपेक्टिंग आयशा कि आप जो है वो इंशाल्लाह योर इंटरव्यू विल बी द वंडरफुल इंटरव्यू। और हमने आपको इसीलिए बता दिया, नॉमिनेट कर दिया कि आप जो है वो आप ज्यादा मेहनत करें, ठीक है। तो इन चीजों जो है वो जरूर देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट एस्पेक्ट की तरफ और वो हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन जो हैं हमारे पास हमेशा टाइम कम रह जाता था तो इसलिए मैंने कोशिश की कि इसको एक वर्ड की फाइल में मैं लिख सकूं ताकि आपके सामने जो है वो हम इन्हें प्रेजेंट कर सकें। ओके जी। अच्छा जी, अब आपको क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। अच्छा जी, वन बाय वन देखते चले जाइएगा। मैंने जैसा कि लेक्चर के शुरू में आपसे रिक्वेस्ट की थी, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया फ्रॉम 1660 से 1700 के दरमियान जो हैं, जो हमारे क्वेश्चंस थे, हम सिर्फ अब उनके ऊपर बात कर रहे हैं जो कि प्रीवियस इंटरव्यूज का पार्ट रहे हैं। 1600 से 17 के दरमियान कुछ क्वेश्चंस को आज देखेंगे, कुछ को हम कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। यहाँ तक तो डेफिनेशन बड़ी आसान है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स के ऊपर आपने जो है वो बात करनी है, या रिस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स के ऊपर बात करनी है। द नेम्स ऑफ द चीफ प्रैक्टिशनर्स ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर। अब जब यहाँ पे आप पहुंचेंगे, कॉमेडी ऑफ मैनर आप सभी जानते हैं कि इसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो हम रेफरेंस देंगे रिस्टोरेशन एज का, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स ही जो है वो चीफली द वाज द प्रोडक्शन ऑफ दिस एज। इसमें हम जो है वो बात करेंगे राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसमें मैनर्स को देखा जाता था। इसमें हम जो है वो जो नेम मेंशन करेंगे कि राइट ऑन द चीफ प्रैक्टिशनर्स ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। पहला नेम हमारे पास सर जॉर्ज इथरिज का आ जाता है। आप इसको भी गूगल करेंगे आसानी से मिल जाएगा। दूसरा हमारे पास विलियम वेचरली का आ जाता है। तीसरा विलियम कॉन्ग्रीव का आ जाता है। जॉन वेनबर्ग का आ जाता है, जॉन वेनबर्ग। और लास्ट में हमारे पास जो है वो जॉर्ज फरखर का नाम आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप तीन नेम मेंशन कर सकते हैं कोई से भी। विलियम वेचरले का कर लीजिएगा, कॉन्ग्रीव का कर लीजिएगा, जॉन वेनबर्ग का कर लीजिएगा। ये फेमस हैं। और ना सिर्फ इनके काम को मेंशन कीजिए, नाम मेंशन कीजिएगा, बल्कि ये भी मेंशन कीजिएगा कि ये किस तरह से मूव ऑन कर रहे हैं, इन्होंने क्या क्या किया, इनकी क्रिटिसिज्म क्या थी, इनका वर्क क्या था, उन्होंने किस तरह से एरिया को शेप किया था, ठीक है जी। सो दैट इज समथिंग अबाउट द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अच्छा जी, हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है इस एज में से, दैट इज कि हमारे पास व्हाई ऑल क्लासेस आर नॉट ट्रेसेबल इन द लिटरेचर ऑफ रिस्टोरेशन एज। याद रखें, ये ऐसे क्वेश्चन उन एस्पिरेंट से पूछे जाते हैं, उन स्टूडेंट से पूछे जाते हैं जो इस एज को अपनी फेवरेट एज के तौर पर लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ट्रेसेबल क्यों नहीं होते हैं, हम इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं कि लिटरेचर जो है तमाम क्लासेस का क्यों नहीं होता। तो जो मेरा अगर आंसर होता है इस पे, तो मेरा शायद ये इसका आंसर होता है कि the manners which the comedy of manners reveals were not the manners of all classes of restoration society. So अब हमारे पास इसमें जो है किसी भी कल्चर के अंदर सिर्फ कोर्टली क्लासेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। We need to understand कि एलिजाबेथन एज और रिस्टोरेशन एज के अंदर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। एलिजाबेथन ड्रामा जो है वो क्या करते थे, वो लोगों की लंदन के अंदर बेसिक लाइफ को जो है वो दिखाते थे, सादा जिंदगी को दिखाते थे। लेकिन रिस्टोरेशन एज में वही लंदन बदल जाता है। अब हमारे पास जो है जब ये लंदन बदलता है तो अब हमारे पास वो जो है सिर्फ कोर्टली क्लासेस के लिए प्लेस को लिख रहे होते हैं। अब जो प्ले राइट्स हैं वो अपने आप को समझते हैं कि वो बड़े जेंटलमैन हैं, वो बड़े फैशनेबल हैं। जैसा कि मैं इसमें फिर विलियम कॉन्ग्रीव की बात जो है वो मेंशन करूंगा, और इस तरह से हम इनको मूव ऑन कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक हिंट दे दिया
कि आप किस तरह से मूव ऑन करेंगे, तो आप इसको बाकी को प्रिपेयर कर सकते हो इस पर्सपेक्टिव से। The mirror of restoration comedy gave us immortality and sexual grossness. What are your comments? अच्छा जी, इमोर्टैलिटी का टाइटल रिस्टोरेशन एज के ऊपर बहुत ब्लैटेंटली लगाया जाता है, कहा यह जाता है कि इस एज ने और कुछ पैदा नहीं किया सिवाय यही इमोरल किस्म के जो है वो प्लेज थे। देखें, हर एज जो होती है वो रिफ्लेक्शन होती है वहां के रहने वाले लोगों की। ये जो रिस्टोरेशन एज है ये दिखाती है वहां के रहने वाले लोगों की। इफ आई एम अ राइटर फ्रॉम पाकिस्तान एंड इफ आई एम राइटिंग अ पोएम, तो मैं उसमें बात करूंगा यहाँ के निज़ाम की, मैं उसमें बात करूंगा यहाँ के सिस्टम की, मैं इसमें बात करूंगा यहाँ के लोगों की, ठीक है। और मैं इसमें वो तमाम चीजें बात करूंगा जो मेरे से रिलेटेड है, कॉन्शियसली कह लीजिए या अनकॉन्शियसली कह लीजिए। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा तो मैं फिर या तो यहाँ का नेटिव नहीं हूँ, और या फिर मुझे जो है यहाँ पे लिखना नहीं आता मुझे कि किस तरह से, क्योंकि हम किसी भी एज को माइनस नहीं कर सकते हैं। हबीब जालिब साहब ने लिखा था, आई एम श्योर इट ऑल टाइम इन योर लाइफ, और बहुत अच्छी है। अगर आप बेनाम से सपने दिखलाकर, ए दिल हर जा न फिसला कर, ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ न निकला कर, ना डरते हैं ना नादिम हैं, हाँ कहने को वो खादिम हैं, यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं, ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर, यहाँ राकम सारे लेते हैं, कवानीन यहाँ ना टिकते हैं यहाँ पर कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं, यहाँ डॉलर डॉलर होती है, सोती है जीडीपी, और कुछ लोग हैं आलीशान बहुत। इस तरह से आप कुछ कोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी, इस एज में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, और वो यही था कि हाई, वो क्या थे, इस तरह से ही थे और वो उन्हीं को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है जी। सो तो आप क्वेश्चन दे दीजिए, आप इनके डायलॉग्स पे बात कर लीजिए, आप एक्यूरेसीज पे बात कर लीजिए, और किस तरह से चीजें थी ये सारी की सारी आप नरेट कर सकते हैं। ओके, टाइम हमारा तेजी से गुजर रहा है, हम कहाँ थे, और यहाँ है। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीरो प्ले एंड हीरो ट्रेजेडी? आसान सा क्वेश्चन है, वैसे कर लीजिएगा इसको जरा ढंग से। आप जानते हैं हीरो प्ले वो वाला प्ले होता है कि जिसमें जो है वो एक हीरो पॉइंट होती है, एपिक की तरह का होता है। ये जो लाइफ के अंदर जो है वो हीरो वॉरियर को बताता है, एक ऐसा पर्सन जो कि स्वॉर्ड्स को ढंग से चला सकता है, ठीक है। सो हीरो ट्रेजेडी क्या होती है? हीरो ट्रेजेडी के मतलब भी आप बात कर सकते हैं डिटेल से, कि इसके अंदर जो है वो जो चीजें हीरोइज्म से ही चलती हैं, और ट्रेजेडी वो होती है जिसमें कोई लॉस होता है, जिसमें डेथ होती है, जिसमें कैटास्ट्रॉफी होती है। इन चीजों को आपने मेंशन करना है। Mention the names of any four heroic plays by John Dryden। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। वन सेकेंड, जॉन ड्राइडन के कोई से चार हीरोइक प्ले जो हैं आप लिख सकते हैं, नाम जो है। बाय द वे जॉन ड्राइडन ने काफी काम किया था, और इंडियन एम्पर उसका जो है वो 1665 का एक प्ले है। इसके अलावा जो है वो औरंगजेब भी उसने लिखा था 1675 में। उसके अलावा टाइटनिक लव था। तो ये चार जो है वो नेम हो सकते हैं, और एंड पे जो है वो द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेंडा जो है वो हो सकता है। ओके जी, ओके जी, वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अब इन क्वेश्चंस को रिमेनिंग को नोट कर लीजिएगा। एक्चुअली वी हैव आवर नेक्स्ट सेशन एट 7:30, तो मैं सिर्फ अगली एक्सप्लेनेशन टाइम लेगी और हम उसे स्किप नहीं करना चाहते। अभी हम यहीं तक ही रुक रहे हैं, और इंशाल्लाह कल के सेशन में हम बाकी चीजों को भी डिस्कस करेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे प्लेस योर क्वेश्चन, यू मे गो देयर इन योर व्हाट्सएप एंड यू मे टाइप योर क्वेश्चन देयर। अगर कोई क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो। अभी सिर्फ हमने इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को किया है, और रिमेनिंग 5 को हम कल कर रहे हैं, ठीक है जी। So thank you so much everyone, take care of yourself and hope to see all of you tomorrow. Bye.